Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In this video, we are going to discuss some operations on list. Today, we will discuss how we can append an element to a list, how we can update an element to a list, and how we can delete an element from the existing list. So let's start. First is appending element to a list. In Python, we use append method to add a single element at the end of the existing element in the list. Add a single element means हम एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. ओके, ओनली वन एलिमेंट कैन बी एडेड एट अ वन टाइम. क्लियर? एंड एल क्या है? देखो, दिस इज द सिंटैक्स. This is the syntax to add an element to a list, where L क्या है? L is the list in which we have to append an element. Dot. This is the append method, and it takes exactly one argument. Okay. Remember that it takes only one argument. This is the item. Item क्या है बेटा? Element to be append. जो element हमें append करना है, this is the item. Okay. Now see this example. Here lst is a list. lst is a list variable containing a list having 3 elements, 1, 3 and 5. कितने elements हैं? 3 elements हैं, and all these 3 elements are of integer type. Now lst dot append 7. हम क्या append कर रहे हैं? वैल्यू 7. 7 कैसा है? इंटीजर वैल्यू है. ओके. नाउ 7 कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा बेटा? 5 के बाद. नाउ आई डिस्प्ले lst. When I display lst, then it will display the list after add the element at the end of the existing elements of the lst. 1, 3, 5. These are the existing elements, and इनके बाद में उसने क्या ऐड कर दिया? 7. So this is the list after appending elements 7. Clear? Now let's do this practically also. Here L is a list having 3 elements, 1, 2 and 3. Now if I want to add an element 4, this is the integer type, है ना? 4 कैसा है? Integer है. So now display L. Here 4 is successfully added to this list L. Now L क्या होगी बेटा? L क्या लिस्ट होगी? L क्या लिस्ट वेरिएबल है? L में अब क्या एलिमेंट होगी? 1, 2, 3 and 4. If I want to append an element character, okay, now display L, then A is successfully added to this list also, है ना? अभी क्या थी लिस्ट में? 1, 2, 3, 4. Now A is also successfully added to this list. Next, if I want to append a string, then it will also successfully add it to this. 1, 2, 3, 4 A. ये elements से भी L के अंदर. Here I am appending a string Python. Now Python is also successfully added to this list. ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट है वो आपकी क्या है? इस लिस्ट में सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू है. ओके, हमने इसमें क्या लिया? स्टार्टिंग में सिर्फ इंटीजर वैल्यू. ऐसा नहीं है कि हम इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. नो, इफ आई वांट टू ऐड अ कैरेक्टर वैल्यू आल्सो, ठीक है, आई कैन add a character value also, a string value also. If I want to append a floating value also, if I want to append a floating value, then I can do that. See, okay, the 12.4 is also successfully added to this list. Clear? Next is updating elements to a list. To update or change the element of a particular index of a list,
then we can simply assign a new value to that particular index of the list. Here this is the syntax. L is a list in which we have to update an element, एंड इंडेक्स क्या है बेटा, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको वैल्यू को चेंज करना है, एंड बाय यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर वी कैन असाइन अ न्यू वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. सी दिस एग्जांपल. LST क्या है? LST is a list variable having a list containing 3 elements 1, 3 and 5. Now if I want to change the element at one index, तो इसका इंडेक्स कितना है? 0. This is 1 and this is index 2. Now I want to change the value at index 1. अभी index 1 पे क्या वैल्यू है? 3. अब मैं क्या वैल्यू साइन कर रही हूँ इसी न्यू वैल्यू 8. ये क्या हो जाएगा? 3 ओवरराइट होके क्या हो जाएगी बेटा? 8. अभी 3 को मॉडिफाई करके क्या कर देगा? 8. अब LST को डिस्प्ले कराती हूँ. LST तो क्या आएगा? 1, 8 एंड 5. अब 3 किससे रिप्लेस हो गया है? 8 से. ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है? दिस स्टेटमेंट टेल्स अपडेटिंग एन एलिमेंट एट इंडेक्स 1. क्या करिए ये स्टेटमेंट? ये एट इंडेक्स 1 पे वैल्यू चेंज क्या साइन कर रहे हैं हम? 8 न्यू वैल्यू एंड दिस इज योर अपडेटेड लिस्ट. सी अदर एग्जांपल. इफ आई एम टेकिंग अ लिस्ट LANG and it contains string C, C++ and Java. 3 strings हैं C, C++ and Java. If I want to change the value at index 1, now I am assigning a new value, a new string Python. ठीक है. Now I want now display LANG list. Then the value at index 1 पहले क्या थी? C++. Now it modified to a string Python. ठीक है. C, Python and Java. Now the value at index 1 has been modified. Next is deleting element to a list. In Python we can use del statement to delete an element from the list or to delete all the elements identified by the slice. Okay, here these are the syntax. तो del क्या है? Del is a keyword. Okay, del. List क्या है? In which we have to perform delete operation. ठीक है. del list. इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है? ये जिस इंडेक्स पे हमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को रिमूव करना है. जिस इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना है, दिस इज द इंडेक्स. टू रिमूव एन एलिमेंट एट द इंडेक्स. नेक्स्ट इज del list start and stop. देखो start and stop both the index are separated by a column, so this is the slice operation. ठीक है. स्लाइस ऑपरेशन हमें क्या बताता है बेटा? एक रेंज, कि किस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर हमें क्या करना है? डिलीट करना है एलिमेंट्स को. तो when we use slicing operation then and index is not included. तो इसकी रेंज क्या होगी? start to stop -1. तो start to stop -1 जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या करेगा? उन सभी को रिमूव करेगा. क्लियर. नेक्स्ट इज del list name. ये क्या करेगा? del है एंड दिस इज द list name on which we have to perform delete operation. तो ये क्या करेगा? It will delete all the elements of the list and the list object also. और list object को भी delete कर देगा. Okay, let's see. LST is a list having 8 elements. है ना? 1 to 8. This is at index 1, 0 and this is 1 and 2. Next is 3, 4 and 5. Next one is 6 and 7. 0 to 7 इंडेक्स है और एलिमेंट्स के हैं बेटा 1 to 8. नाउ फर्स्ट del स्टेटमेंट क्या करेगी? del LST4 को LST4 इंडेक्स कितना है? 4. इंडेक्स 4 पे क्या एलिमेंट है? 5. तो ये del स्टेटमेंट क्या करेगी? इस एलिमेंट को
रिमूव कर देगी। नाउ लिस्ट में क्या एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 4 6 7 8. If I display LST list, then it will contain the elements 1 2 3 4 6 7 8, this one and this. Clear? Now if I am using del LST 2 to 6, ये मैं क्या यूज कर रही हूँ, स्लाइसिंग ऑपरेशन है ना। अब हमारी लिस्ट क्या है, अब जो हमारी लिस्ट है ना वो ये बन चुकी है। आफ्टर रिमूविंग एन एलिमेंट एट इंडेक्स 4 वी गेट दिस लिस्ट, है ना, हमें ये लिस्ट मिली। नाउ अब हमें क्या करना है, 2 to 6, तो एंड इंडेक्स इंक्लूड होगा नहीं, दैट मीन्स 2 to 5। देखो 2 कौन सा इंडेक्स पे है, 0 1 2, 2 इंडेक्स पे वैल्यू है 3, तो यहाँ से लेके 2 3 4 5, 5 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 7, यहाँ से लेके ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये डेल स्टेटमेंट क्या करेगी, इस स्लाइसिंग ऑपरेशन में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबको क्या करेगी, डिलीट। अब इसमें क्या एलिमेंट बचेंगे, 1 2 and 8. If I display LST variable, then it will display the list containing 1 2 and 8. If I am using the del statement simply with list variable del LST, अब मैं क्या यूज कर रही हूँ, सिंपली लिस्ट नेम यूज कर रही हूँ LST। नाउ अब ये क्या करेगी डेल स्टेटमेंट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर इन सबको भी डिलीट कर देगी, साथ में जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसको भी डिलीट कर देगी। दैट मीन्स इफ आई एम ट्राइंग टू डिस्प्ले दिस LST वेरिएबल, देन इट विल डिस्प्ले नेम एरर, नेम LST इज नॉट डिफाइंड। सी विद एग्जांपल, if I am taking a list 22 3 44 and 55, now 66, here 6 elements in the list L. If I am using del स्टेटमेंट, ठीक है, अब मैं क्या दे रही हूँ, सिर्फ लिस्ट नेम एंड इंडेक्स, तो इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है 33, तो इट विल रिमूव दिस, नाउ डिस्प्ले L, देन इट विल रिमूव द वैल्यू 33। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई दोनों और ये लास्ट की 3 वैल्यूज। नाउ इफ आई एम यूजिंग del list 1 colon 4, 4 तो इंक्लूड नहीं होगा स्लाइस ऑपरेशन में, तो 1 2 3, 1 पे क्या वैल्यू है 22, 2 पे है 44, 3 पे है 55, दैट मीन्स ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रिमूव, और क्या बचेगा लिस्ट के अंदर 11 and 66। नाउ इफ आई डिस्प्ले L, then it will display the list having 2 elements 11 and 66. Now if I am using del and list name, then it will delete these 2 elements and the list object L also. Now here I display L, so it will display name error. ये क्या करेगा, नेम एरर, नेम L इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट ने क्या किया, डेल और लिस्ट नेम, इसने क्या किया, लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको भी डिलीट कर दिया और साथ में जो लिस्ट थी, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो था उसको भी डिलीट कर दिया। अब इस नाम का कोई लिस्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो नेम L इज नॉट डिफाइंड। एंड हियर you can also use pop method to remove a single element, not the list slices. आप pop method से सिर्फ एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, विद इन द रेंज आप एलिमेंट्स को, मोर देन 1 एलिमेंट्स को आप डिलीट नहीं कर सकते एट अ वन टाइम बाय यूजिंग द पॉप मेथड। एंड जब हम लिस्ट मेथड्स को स्टडी करेंगे, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द पॉप मेथड। आई होप these operations are clear to you. If you like my video, then like, comments and share my video, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and press the bell icon to get latest updates for my upcoming videos.